label of at the level of global standard. You have to set some global standards for your institution. If you are not able to compete your institute at the global level, it means you have to fail to get the accredited. मतलब आपका स्टूडेंट जो है he will not get the chance in US. आपको मालूम है कि recently in the past 2 months some students sent back to the India because their degree was not accredited. Means आपकी process जो है आपका institution जो है it should be accredited by the accreditation agency, and for that accreditation the curriculum and teaching learning is the part of analysis. It covers 60% of mass other than the infrastructures, facilities, and then do these two things. That is the curriculum development and the teaching learning pays much more attention than other things. So the teaching learning should make much more it should given much more attention. So that's why all the means this country all over the world are worried about the teaching learning process. I will discuss in brief. So what is going to be covered? Background, what makes an effective learning environment? How do we assess quality? And some these things I will cover. Why video makes the difference, and I will give some summary. So background, what is the student learning approach and why it works? So what is the student learning approach? That if we go through this particular approach that force the student to think about themselves as a learner. हम बच्चे को ये बताना चाहते हैं this process particularly inculcate in the mind of a student that he should learn, क्योंकि हमने we have created such an environment of learning so that student by forcefully not force that force come by its interest. उसके interest से उसके दिमाग में आएगा कि I have to learn, I should have the very good learner. So that study, if you are going to have the student centric approach, it means you have to force the students to think about themselves as a learner. Then you will tell that environment will create that this environment is for the knowledge and skill. That is the emphasis and less about the test entry. बच्चा ये सोचेगा कि मैं यहाँ पे I am coming for the knowledge. I am here for gaining the knowledge. I am gaining for I have to learn some skill, but not for I am coming for not for the grade. But in the older days, हम लोग क्या करते थे? We are much more worried about the grade system. आपने इतना स्कोर कर लिया, but now these days grade is not important thing, but the knowledge and skill is very important. आपको देखा है कल कंपनियां हायर करती हैं और एक साल बाद कहती है now you can go back to your home because your knowledge and skill level is not so good as I have required the company as the company is required. So this particular environment of learning approach will able to have students have more about that. It will student think about more about the knowledge and skill, not about the test and grade. It encourages the students to be producer of knowledge rather than just information. हम बच्चे को we are going to develop student of such a level that the student will able to create or design, not just as a like a salesman. वो जाएगा, it will narrate the things, what is the quality of product. Not हमें उसकी memory check नहीं करना है. Whatever the environment we are creating, it will enforce the student to the producer of knowledge. The student will able to produce the knowledge by creating or by developing. Prepare the student for real time challenges. देखिए हम आज कोविड है, मान लीजिए द डॉक्टर्स और ये जो डॉक्टर्स हैं या जो आपके सीरम इंस्टीट्यूट के ये वैक्सीन प्रोड्यूस कर रहे हैं, मींस they have prepared for the real time challenges. They have the good knowledge of the subject. That's why they are facing the real time challenges. So in engineering we should देखिए हमारे यहाँ what we our student what they can do if they have learned properly
It means they can have to develop the concentrator, how to harness the oxygen from the environment. Lot of engineers, some students from MNIT Allahabad, they are working on particular for the COVID, how to work for the COVID, to facilitate the challenges which is coming from the COVID. जैसे हमें सैनिटाइजर मशीन बनाई है, कई लोगों ने आइडियाज लगाए हैं, तो these are the real time challenges problem. You are going to prepare the student for the real time challenges. How it works? You are empowering the student. आपने बच्चे को सर्वे सर्वा बना दिया. देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी यही कह रही है कि आपको यदि डांस करना है आप डांस करिए. If you are very much interested in lab work, equally credit will be given to the lab work. Means you are going to empower the student for as a learner. आपने बच्चे को ही, स्टूडेंट को ही आपने एम्पावर कर दिया. भैया आपको ही, आप क्या करना चाहते हो वो हम कैसे, हाउ यू आर गोइंग टू एम्पावर, यू आर गोइंग टू चेंज इन योर कैरिकुलम. देखिए मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स दे कांट चेंज द कैरिकुलम, बट एज एन MITS we are able to change the curriculum by the feedback by the students. We take the feedback from employer, we take the feedback from all the stakeholders like parents, students, and accordingly we change the syllabus. Means ultimately what we are going to do, we are going to empower the students, forces student to think about themselves as a learner. अब यदि आपने बच्चे को एम्पावर कर दिया और मैं ही यदि आ गया, मेरी ये जवाबदारी हो गई, अब now I am responsible for that each and every bad things or good things which is happens with me. I am responsible means force student to think about themselves as a learner. अब मैं अपने बारे में सोचने लगूंगा. यदि मैं कोई दुकान, अब जब तक मैं दुकान से सामान खरीद रहा था जब तक तो मैं दुकानदार के बारे में नहीं सोच सकता. लेकिन once I have the seat of my shopkeeper seat, I have to think about my shop. So that's why this approach is very good as a student learner. Create independence and ownership of learning. मैंने अभी आपको बात करी, मैंने ऑनरशिप दे दी अब लर्निंग की आपको. यू आर ऑनर ऑफ लर्नर. मैं बाई फोर्सफुली मैं गया क्लासरूम में गया, जाके स्टूडेंट को पढ़ाया और वापस आ गया, नहीं. अब स्टूडेंट को आपने एम्पावर कर दिया. आप यदि नहीं गए तो स्टूडेंट आपको कॉल करके कहेगा कि भाई सर आपने अच्छा नहीं पढ़ाया, आपने टीचिंग अच्छी नहीं करी है. तो आपकी ये यहाँ पे ये क्या होगा, आपके लिए भी चैलेंज है. मतलब यू हैव टू फेस द challenge each and every time as a tutor, as a teacher, because you are giving the ownership to the learner. Or learner is itself responsible for the curriculum and learning approaches. Foster collaborative learning. अब बच्चे को आपने you have designed the curriculum in such a way that the student collaborate with other departments also. देखिए बाहर में क्या होता है, आप गो कार्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल वाला स्टूडेंट भी होता है, इलेक्ट्रिकल वाला भी आपका क्या कहते हैं गाइड मेंटर होता है, वो आपको इलेक्ट्रिक स्विचेस के, इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में बताता है. तो the students are going to be collaborate with the other departments also. And when we talk about the energy, civil engineering department, architecture department, that the collaborative work will be there, because you are going to design your syllabus in such a way that you are going to collaborate with each and other departments. It may be social, NSS, आप NSS का भी वर्क भी करते हैं. Encourage creativity. You always encourage the creativity. आपको आप नहीं करेंगे तो आपको क्रिएटिविटी, यदि ओल्डर डे में जाएंगे बच्चे क्रिएटिविटी करते थे, वो बहुत ज्यादा आपका वहां पर कंसर्न नहीं होता था. लेकिन आज के टाइम में क्या है, आप लॉट ऑफ एक्टिविटीज आर इन योर करिकुलम, so you have to encourage the creativity of the students. Create rich learning environment inside and outside the classroom. अब ये नहीं है कि आपने क्लासरूम में पढ़ाया और आप चले गए. You have to create such a, जो आपका ये particularly student learning approach है, you have to create the environment inside and outside the classroom. Coming to the quality of teacher, what should be the characteristics of a teacher? हमारे टीचर की क्या क्वालिटीज होना चाहिए? Whether the teacher has the personal and professional management, professional quality is requires
Coming to the characteristics, a good teacher are strong communicators. देखिए, आप अपनी बात को, suppose I am teaching heat transfer, या suppose I am teaching engineering graphics, and I am unable to communicate whatever my thinking, whatever the idea, whatever the solution, I am not able to communicate to the students. I am not the good teacher. देखिए, एक teacher is very good. It has a very good manager also. Means it should have the professional skills. यदि आप बच्चे में आप अपनी बात को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो यू शुड नॉट बी. सबसे बेस्ट क्वालिटी है, फर्स्ट क्वालिटी, आप अपनी ही बात को बच्चे को बता सको. मैं क्लास आपके फीडबैक में आता है, टीचर हैज गुड नॉलेज बट नॉट एबल टू एक्सप्लेन, मीन्स यू आर नॉट ए गुड कम्युनिकेटर. यू हैव टू लिसन वेल. आपको बच्चे की बात सुनना है. if you are not listening to others in your class, means there will be only one way communication. You are not able to create the learning environment inside your class. That's why you have to listen also. You have to focus on collaboration. आपका ये नहीं है कि मैंने पढ़ा दिया, बट सपोज मैं एक सिंपल सी बात करूं कि मेरे को आई एम टीचिंग इन सिंस लास्ट 20 years, I am teaching heat transfer, engineering graphics, material science. So, and I am not able to collaborate with the other companies or other industry persons to learn my students for the practical knowledge. So I should have to collaborate. I should have the technical visit for my students. So you have to be collaborative. You have to collaborate with you have the ability to collaborate with other departments. मान लीजिए मेरे को डिजाइन के बारे में बात करना है. I am energy efficient engineer. I am going to teach the energy subject to my students, and I should not have the knowledge about the where should we put the window, where should be the doors, what should be the design, what should be the thickness of the wall. I have to collaborate with the civil engineering department. I have to collaborate with the architecture department. So ultimately, your aim, whatever you are teaching, it should be 100% goes to the mind of your students. So collaborative teaching is equally important. And you are adaptable. ऐसा ना हो कि आप adaptable नहीं हैं. पता लगा कि आपको आज, मैं हमेशा पीपीटी पढ़ाता था, आज पता लगा लाइट नहीं है इंस्टीट्यूट्स में, आज मेरे यहाँ लाइट नहीं है, तो what I should do? I should adopt each and everything. I should go on blackboard. I will teach on the blackboard. When I will have the sound knowledge on my subject. Sometimes क्या होता है, आपने पीपीटी तैयार कर लिया, पीपीटी में आपने नरेट कर दिया. Not the narration. It should be the explanation also. So when you should have the very good or sufficient knowledge of that subject, then there should not be you are not adaptable. मतलब मैं केवल भैया वो फॉल सीलिंग की लाइट होगी, फॉल सीलिंग होगी तभी मैं अच्छा पढ़ा पाऊंगा, ऐसा नहीं है. I should be adaptable for each and every condition. I should not for given a particular condition. Good teacher are engaging. ऐसा नहीं है बच्चों को आप एंगेज नहीं कर पा रहे हैं. आपने पता लगा कि आपने जब तक जस्ट आपने बैक साइड हुए आप और आपने बोर्ड की तरफ अपना फेस किया, now student start chit chatting. So you should able to engage the students in your class. Your delivery and whatever you are teaching, you should able to engage the student. कहते हैं कि हम when we talk about the movie में क्या होता है, देखिए आप बंध जाते हैं पूर्णतः. कई बार आपको ये एहसास होता है, you feel you are there in the movie. Why? I will discuss that point. कि why you are able to write each and every dialogues of the movie. एक सिंगल वे में आप मूवी देख के आते हैं और डायलॉग रट जाता है, लेकिन एक स्टूडेंट जो आपकी क्लास में पढ़ रहा है, वो यदि थर्मल कंडक्टिविटी की डेफिनेशन पूछी, ही इज नॉट एबल टू नरेट व्हेन यू गो ऑफ फ्रॉम द क्लास. व्हाई? हैव यू थिंक अबाउट दैट कि आपने जो पढ़ाया उसमें जो की पॉइंट्स थे, whether your student is able to tell them
आफ्टर द क्लास, और आप मूवी देख के आते हो तो आपको याद होते हैं डायलॉग, भाई उसने ये कहा था, उसने ये कहा था, क्यों, वाई, यू हैव टू थिंक अबाउट दैट. You should have to show the empathy with the students. ऐसा नहीं है आपने पढ़ाया, स्ट्रिक्ट है आप, आपने एंगेज कर लिया, बट you should not have the empathy with your students. You should have the empathy with your students. You should have the patience. Patience is equally important. Good teacher shares the best practices. So these are all the basic characteristics of the good teachers. Now coming to the next slide, देखिए कितना बढ़िया कोट लिखा है. The true teachers are those who help us think of others, think of ourselves. क्या मतलब है? The true teachers are those who help us. हमको मदद तो करते हैं, साथ में हमारे अपने बारे में, अपने डेवलपमेंट के बारे में, अपने करियर के बारे में सोचने में मदद करते हैं. They are the very good teachers. Now coming to the learning pyramid. मैं आप इसकी बात कर रहा था, और ये आपको मूवी, अपनी मूवी में whenever you see the movie, you come to this conclusion. Means this is the learning pyramid. आप देखिए, यदि आप पैसिव टीचिंग मेथोडोलॉजी यूज करते हैं, व्हाट आर द पैसिव टेक्नोलॉजी, व्हाट आर द मेथड्स व्हिच यू यूजेस, that you are giving only lectures, you are allowing the students to read lectures and reading, you are allowing the you are showing the video lectures to your students, you are demonstrating, means you are going to have the lab work in your institutes. So only this pyramid, that 5% students are able to learn, remember the lecture, 10% students are able to remember when you are reading, and when the students are reading and learning through the lectures. But if you are involving the lab work, only 20%. If you are going to demonstrate, एक सिंपल सा एग्जाम्पल, आपने इंजन को खोला, एक्सपेरिमेंट किया, खोल के आपने उसको वापस असेंबल्ड कर दिया, यू आर गोइंग टू डिमॉन्स्ट्रेट द प्रोसेसेस, 30% स्टूडेंट विल एबल टू लर्न. व्हेन यू आर डिस्कसिंग, अब मान लीजिए आपने 4 स्टेप्स कर लिए हैं, अब बच्चों को आपने ग्रुप में डिवाइड कर दिया, ग्रुप डिस्कशन कर दिया, 50% स्टूडेंट्स विल एबल टू लर्न. दैट इज द पार्टिसिपेटरी टीचिंग मेथोडोलॉजी. And then you have to allow them practice, you have to allow them doing. You are going to do the, you are going to allow student to do the things. आपने प्रोजेक्ट दे दिया बच्चे. देखिए ये हमारा पूरा लर्निंग एनवायरनमेंट है कि आप लेक्चर, आपने पहले लेक्चर लिया, बच्चे को आपने कुछ रीडिंग करने को दिया, बच्चे ने रीड किया, आपने वीडियो दिखाए, आप लैब वर्क में लेके गए, ग्रुप डिस्कशन किया आपने अपने सब्जेक्ट पे, देन आपने उसको एक प्रोजेक्ट दे दिया कि at the end of the my class work I will have the project. और आपके प्रोजेक्ट it should not be repeatable. आपने एक प्रोजेक्ट आज दिया, वही प्रोजेक्ट नेक्स्ट ईयर में दे दिया, नहीं. You should have to be challenging. आपको every time you have to have the challenging attitude. मतलब आपने बच्चे को आपने प्रोजेक्ट दिया, it is very new, it is related to the fundamental, then the 75% means learning, जो उसका लेवल होगा, it will be 75%. Student will able to learn whatever you have taught in your class, it will be learn 75%. जब वो आपका प्रोजेक्ट पूरा कर लेगा. लेकिन once that student will able to demonstrate, it has created the project. Now the student is able to demonstrate, able to explain, means he learn or she learn 90% of your course. So you have to involve all these process that called the learning pyramid. देखिए मैंने आपसे कहा, और मिश्रा जी, मैं समझता हूँ सत्यजीत मोहंती जी, am I audible? मोहंती जी, सत्यजीत मोहंती जी, सत्यजीत मोहंती. ऑडिबल सर जी, ऑडिबल. Yes sir. यदि आप, if you, yes sir. Sir, what are the different we can say Bloom taxonomy? क्या है हमारा, what are the level of Bloom taxonomy? Bloom taxonomy में हम पिरामिड में स्टेजेस क्या है, लर्निंग स्टेजेस क्या है, what are the learning stages, learning outcomes क्या है as per the
Bloom taxonomy. That Manish Gupta ji, Manish Gupta ji. Yes, sir. Good afternoon, sir. आप थोड़ा वीडियो ऑन करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा. Good afternoon. हमारे ब्लूम टेक्सोनॉमी का लर्निंग आउटकम्स क्या क्या है, उसको हमने कैसे जो पिरामिड है वो किस तरीके से बनाया हुआ है. देखिए उसमें हमारा है, हम बात करते हैं रिमेंबर. फर्स्ट है रिमेंबर, देन सेकेंड पॉइंट है अंडरस्टैंड, थर्ड है अप्लाई, फोर्थ है एनालाइज. हम यदि कोई चीज को रिमेंबर कर लिया है, हमने उसको समझ लिया है, then we can apply, then analyze, then what we do, we evaluate, and then finally we create. Evaluate, then create. 10%, 20%. So what we do, the learning activities जो भी है हमारा को ऑब्जेक्टिव जो यहाँ पे हम we are showing that the pupils are generally remember 10% whatever they have read. Whatever they have here, that the 20% our 20% जो होंगे that will be able to remember. 30% what they see, 50% what they see and hear, 70% what they see, hear and write, and 90% whatever they have learned, design, discussion, each and everything. Means हम इसको यदि divide करते हैं तो first two category will be the your remember and understand. Second, you will have the apply and analyze. Third, that will be create and evaluate. Yes. Now we can divide our teaching style, that the teacher may be outstanding, teacher may be good, and teacher may require the improvement, and some teachers have the inadequate quality. So what quality the teacher should have? First, coming from the inadequate teaching, हमारी inadequate teaching में, when we talk about the inadequate teaching, many students do not progress well enough because of teaching is ineffective. देखिए आपके हम जैसे मैं IPS or most of the institutions which are available in the Gwalior, they are mostly bonded with the university curriculum and whatever the condition led by the university. But the teaching style, teaching methodology, you should not have the very good teaching practices. That's why the student will do not have progress well enough because teaching is ineffective. Much teaching fails to capture the student. आप बच्चों का इंटरेस्ट नहीं कैप्चर कर पा रहे. देखिए आप बच्चे जाते हैं, पता लगा कि आपकी क्लास में out of 60 only 20 students are going to be present in your class. Means you are not able to attract the students. Means you are failing in your teaching methodology, in teaching quality. Your activities are not well matched to the student need, whatever the needs by the students. Student जो चाहता है आप, you are not able to deliver. हम देखिए बात करेंगे ऐसा क्यों है, why it happens. Some teachers commands of the subjects is inadequate. आपकी सब्जेक्ट पे कमांड नहीं है. आप गए देखिए in these times lot of the platforms are available to learn. देखिए Moodle आपका NPTEL lectures are there. Most of the data, most of the books, copies are available on the net. तो आपकी क्लास में स्टूडेंट क्यों आएगा, आपकी क्यों आना चाहेगा स्टूडेंट्स? Still there is a gap between the knowledge which is available on the internet, knowledge available on the book, and the learner approach, whatever the learner wants to. It is एक स्टूडेंट बैठता है, पता लगा एक लेक्चर को समझने में पूरा दिन लग जाता है. Because that gap, that time, you are going to minimize the time between the
learners available material and learner. आप दोनों के बीच में you are creating a bridge. You act as a bridge. If you are a good teacher, it means आपने खुद ने भी आपने लेक्चर नहीं सुना है NPTEL का, आपने whatever the data available, whatever the course material available, whatever the new technology available on the net, you have not gone through that. Means you are not a good teacher. Some teachers commands on the subject is inadequate. It means your command on that subject is inadequate. आप देखिए, मैं ग्वालियर के सिनारियो की बात करूं, आप जो है you go through the question में बोले शिवानी से पढ़ लीजिए, टीचर्स के पास शिवानी है, आप you go in your class with the book, आपके हाथ में किताब होती है, तो आप यदि ऐसा करके टीच कर रहे हैं, you should not be a very good teacher. आप गए, आपने जो है स्टूडेंट क्लास, आप क्लास लेके बुक लेके जा रहे हैं क्लास में, you are not a good teacher. Good teacher should have the very sound knowledge on your subject. Whatever you are teaching, you should be well prepared. मैं आपको बताऊंगा गुड टीचर की क्वालिटी क्या है और एक्सीलेंट टीचर की क्वालिटी क्या है. असेसमेंट इज इनइक्वेट. आप बच्चे का असेसमेंट कर रहे हैं, वो भी इम्प्रॉपर नहीं है, कैजुअल एटीट्यूड है आपका. बच्चा आया सेशनल में, आपने जस्ट मोस्ट ऑफ द टीचर व्हाट दे डू विदाउट चेकिंग प्रैक्टिकल फाइल, विदाउट चेकिंग असाइनमेंट, जस्ट पुट ऑन द ग्रेड, A grade, B grade, but seeing the face of the student. Most of the student faculty is going to do this approach. वो गया और डायरेक्ट फाइल पे मार्क कर दिया. नहीं, if you are a good teacher, you have to go through each and every pages of the. और आपका ऐसा नहीं है असाइनमेंट टॉपिंग वाला, बच्चा टॉप के उतार लाएगा, बच्चा कॉपी कर लाएगा. You have to divide the group in your class. 5 groups, 5 के ग्रुप में आपको, और each group should be given the new problems, new assignments. Some creativity is there. So you have to fulfill all these parameters of Bloom taxonomy. कि आपका assignment भी ऐसा हो. Assignment should also have some course outcome. आपने assignment दे दिया क्योंकि आपका curriculum कह रहा है बच्चे को नंबर देना, नहीं. अब आपका इंस्टीट्यूट क्यों, आपके इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट क्यों आना चाहेगा? Why the student should come in your institute? आप because you are developing your student at par with the international level. आप बच्चों को इंटरनेशनल लेवल पे आप कॉम्पीट करने का, आप अपना प्रोडक्ट ऐसा बना रहे हैं कि इट इज सेलेबल. आप कहीं भी खड़े हो जाएंगे, वो आपका सेल होगा. आईपीएस का स्टूडेंट वहां तक जाएगा, बोले नहीं हमें आईपीएस का स्टूडेंट चाहिए, बिकॉज इट हैज द साउंड नॉलेज, इट हैज द प्रैक्टिकल एक्सपोजर, it has the managerial skill. That's why the student will company will hire the student from your institute. तो आपको as a teacher you have to do comments on the subject. मैंने कहा अभी work or poor, इस तरीके कमेंट्स नहीं, बच्चे को प्रॉपर लिखिए. आप कहाँ गलत हैं और क्यों गलत हैं आप. when you are checking the assignment, when you are checking the practical lab book, comment should be very very justified. आपका कमेंट जस्टिफाइड होना चाहिए, प्रॉपर कमेंट होना चाहिए, कहाँ गलत है, क्यों गलत है, और what type of the improvement. This is the part of your teaching and learning style. Teachers which requires the students make the sufficient progress, they are motivated, do well. Teachers should motivate your student. आप हमेशा मोटिवेट करिए. आप गए क्लास में और मान लीजिए आप क्लास में गए, राम जी थोड़ा सा मैं आई वांट द इंटरेक्टिव सेशन फॉर माय लेक्चर, जो मुझे दिखेंगे मैं पूछूंगा. राम जी थोड़ा सा बताइए कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? सर मैं फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाता हूँ सर. इंजीनियरिंग मेजरमेंट. डे फर्स्ट में आप क्या करते हैं? सपोज यू हैव असाइन्ड द लेक्चर, व्हाट यू डू इन द फर्स्ट लेक्चर? सर जैसे कि अपने नए स्टूडेंट्स रहते हैं कुछ, तो हम इंट्रोडक्शन पहले लेते हैं सर. सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेना सबसे पहले जरूरी रहता है. उसके बाद सब्जेक्ट का सर पूरा इंट्रोडक्शन देते हैं कि उस सब्जेक्ट में सर की क्या क्या है. टॉपिक वाइज डिस्कशन करता हूँ कि इस टॉपिक में ये, फिर बोल देते हैं सर कि नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे.
देखिए मैं आपकी बात लिखता जाता हूँ एक अपनी कॉपी में। आपने सबसे पहले क्या किया, मैं और फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा आपको कहाँ आपकी गलती है। बताइए। यस सर। सर सबसे पहले आपने स्टूडेंट्स का स्टूडेंट क्या है, सबसे इंट्रोडक्शन पहले किया आपने कि भाई यू हैव इंट्रोडक्शन है स्टूडेंट्स ना, का इंट्रोडक्शन। यस सर, यस सर, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टूडेंट। यस सर। मैं पूछना चाहता हूँ व्हाई यू वांट टू टेक द इंट्रोडक्शन ऑफ स्टूडेंट। सर कुछ स्टूडेंट्स जैसे कि मतलब नए आए हैं सर, कुछ मतलब है ना, जैसे कि अब आउटकम बेस्ड कोर्स है, बहुत सारा चेंज हो जाता है, तो नहीं, फर्स्ट सपोज ईयर में। सपोज यू आर टीचिंग इन 5th सेमेस्टर, यू आर टीचिंग इन यस सर, 5th सेमेस्टर, द ऑल द स्टूडेंट्स आर न्यू फॉर यू। देखिए यस आपको सर, बहुत नहीं अच्छे सर। समझ में आएगा इस चीज में जो बताने जा रहा हूँ, यस, यस सर। है ना। तो आपने इंट्रोडक्शन लिया तो क्यों लिया? नहीं सर, फिफ्थ सेमेस्टर का नहीं सर, जैसे कि जो बच्चे न्यू हैं सर उनके लिए नहीं इंट्रोडक्शन नहीं, दूंगा मैं सर। सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ। आई एम गिविंग यू द एग्जांपल, यू आर टीचिंग इन 5th सेमेस्टर। यस सर। देखिए, हाँ चलिए, आपने इंट्रोडक्शन लिया, मैं इंट्रोडक्शन बहुत अच्छी बात है। देन आपने क्या किया? देन सर उसके बाद सब्जेक्ट का मैंने इंट्रोडक्शन दिया सर, कि सब्जेक्ट में मतलब क्या क्या है उसका टॉपिक सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन। थर्ड, फिर देन उसके बाद सर की मतलब इसको देन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अच्छा नेक्स्ट इतने में क्लास। सर देखिए पूरा बहुत एक घंटा अच्छी हो बात है। जाता है। यस सर। अब देखिए आपने बहुत अच्छी बात कही पहले कि आपने इंट्रोडक्शन लिया बच्चों से। तो जी मैं भी सर। फील करता हूँ व्हेन यू गो इन योर फर्स्ट क्लास, यू आस्क स्टूडेंट टू इंट्रोड्यूस देमसेल्फ। वो बच्चा अपने को इंट्रोड्यूस क्यों करे, क्यों ऐसा क्यों? बिकॉज यू आर क्रिएटिंग द इंटेंसिव फीलिंग विद द स्टूडेंट्स। आप बच्चे से एक आत्मीयता वाला, फर्स्ट क्लास में टीचर इज सो हेल्पफुल, और आप जो है बच्चे से एक आत्मीयता वाला, बच्चे को एक फीलिंग ला रहे हो। स्टार्ट फीलिंग विद द इंट्रोडक्शन। बच्चे को फील आना चाहिए। और यस उसका सर। सेकंड फायदा क्या होना चाहिए? यू शुड एबल टू नो ईच एंड एवरी स्टूडेंट बाय देयर नेम्स। आपको हर एक स्टूडेंट का, व्हेन यू आर टीचिंग इन योर क्लास, if you have to be very interactive with your students, then you should have to know the student by their names. आप बच्चे को उसके नाम से जानना चाहिए। तो आप, इससे क्या होगा? when you know the student by their name, you have very good control of on your class. यस सर। फिर आप क्या करेंगे? you are able to talk about your subject. आपने अपने सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस, आपने बताया what are the units in your syllabus, what course यस सर। prerequisites was required, which you studied in your previous classes. You will tell them what are the outcome of your subject, whatever the course which I am going to teach you, what the outcome will. The student, whenever you will be go from after the end of this session, after the examination, when you earn the credit, what quality you will have after learning this subject. You have to tell your student that the what is the course outcome of your subject. Then check the knowledge. Then check the knowledge of your student. What knowledge your student has. What are the level of knowledge you have to deliver in your class. You have to assess your student. In the first class, 2 class, you have assess your student. And यस सर। you make in your mind what group of student. You divide the student into the groups. Slow learner, fast learner, medium learner, creative group of your subject. In 2 class, you just analyze your student. कितने स्टूडेंट आपके सब्जेक्ट में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, कितने स्टूडेंट्स बहुत फास्ट लर्न, मींस इट सेव द टाइम where you have to pay the much more attention when you are teaching. So such good things you have to be inculcate in your teaching style. So coming to the good teaching, teaching is generally challenging. Every time your teaching is challenging. Student feel this teacher is very challenging. He has a knowledge on the subject, or whatever the needs of the student, you are teaching it match with that. Well planned lesson. आप देखिए, कभी भी आप टीचिंग करते हैं, when you teach to the student, when you start the teaching subject, first you have to go through the lesson plan. You prepare lesson plan. What are the books you will go through? All these
things should be well informed to the student before starting your subject. आपका लेसन प्लान होना चाहिए, मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ ये बच्चे को पता होना चाहिए, मैं कहाँ से पढ़ा रहा हूँ ये बच्चे को पता होना चाहिए. Your lecture, if you have the PPT, first you have to well inform about your PPT. तभी आप चैलेंजिंग हो सकते हैं. पता लगा यार मैं क्यों बताऊं बच्चों को अपना PPT, मैं अपने को क्लास में ही बताऊंगा. No, you have to be well informed your PPT to your students. Now, ultimately क्या होगा, you are going to save the time of the students. बच्चे का टाइम सेव कर रहे हैं आप. You are responding well, then student will also respond well. Whenever you will check your certain type of quizzes allowed, 2 or 3 questions you have floated in your class, student will be well respond to your quiz. आप जो है बच्चे क्लास को आप पूरा बांधे रखेंगे, तो ये these are the quality of good teacher. आपने बच्चे को लेक्चर प्लान दे दिया, आपने बच्चे को पीपीटी दे दिया, स्टडी मटेरियल दे दिया. अब देखिए हम जो है अलग बात करें, टूल सेंट्रिक अप्रोच है, प्लेटफॉर्म सेंट्रिक अप्रोच है, दैट इज द डिफरेंट. टूल सेंट्रिक अप्रोच हो गई हमारी, वो आई विल डिस्कस इन द लेटर कि टूल सेंट्रिक अप्रोच क्या है, प्लेटफॉर्म सेंट्रिक अप्रोच क्या है. आपने मूडल पे डाल दिया, सपोज आई हैव मूडल इन माय कॉलेज, Moodle platform is there. I will put on my all lectures. I will plan. आप ये नहीं होगा. क्या होता है कि हम लोग छुट्टी ले लेते हैं. What we do? आज यार पढ़ाने का मूड नहीं है. No, this should not be happen with you. Unless otherwise you have very bad condition. आप बीमार ही नहीं हो गए तो बात अलग है. Otherwise ये don't say such type of words. आज मूड नहीं है, आज मैं नहीं आ पाऊंगा क्लास में. No, never. Never use such type of words if you are a good teacher. आप अपने lectures को, whatever the lecture you have planned for your syllabus, if you are, suppose I have planned 40 lectures for completing my syllabus, so I have to give the lecture plan to my students. इतने lecture में मेरी first unit खत्म होगी. I will cover all these topics. ऐसा नहीं है कि मैंने मेडिकली अनफिट हो गया या हो गया तो मैंने 30 लेक्चर्स लिए, नहीं. आई विल कवर दीज रिमेनिंग 10 लेक्चर्स बाय टेकिंग डिस्कशन विद द स्टूडेंट्स कि मैं कल लेना चाहूंगा, मैं संडे को लेना चाहूंगा, मैं सैटरडे को लेना चाहूंगा, बट आई विल टेक 40 लेक्चर्स एंड आई विल कंप्लीट होल यूनिट्स ऑफ माय सिलेबस. दैट्स व्हाई यू विल क्रिएट द गुड लर्निंग एटमॉस्फेयर इन योर इंस्टीट्यूट. So this activity should be inculcate in your mind, in your heart, कि मेरे में मैं ये चीज करूंगा ही करूंगा. That's why you are good teacher. Now coming to the outstanding, the difference between the good teacher and outstanding teacher means, मान लीजिए आपसे किसी बच्चे ने, if you are teaching, suppose आपने लेक्चर प्लान भी दे दिया, अब बच्चे ने आया आपके पास, suppose he has the problem with the that subject which you are teaching, और उसने all of sudden ऐसा क्वेश्चन आपसे कह दिया, most of the students are not able to answer, but as an excellent teacher, as a good teacher, outstanding teacher, you are able to face that challenges, you are able to answer thoroughly. ऐसा नहीं है कि मैं कल बता दूंगा, ठीक है, कल बता दूंगा, वो गुड टीचर था, लेकिन अभी बताएगा, इसी समय बताएगा, related to your topic, it means it is excellent teacher, it is outstanding teacher. So you, और आप बच्चे की प्रोग्रेस and you are involving other than the teaching. Now slowly you are involving. मैंने क्या पहले, अभी इससे पहले क्या कहा, you in the first lecture, 2-3 lecture you have judged your student. These students are able to create something, these students are able to do project under your guidance, means you are going to create the research atmosphere in your subject. That's why you are excellent teacher, that's why you are outstanding teacher. आप कोशिश करिएगा ये फॉर्मेट अपने इंस्टीट्यूट में अप्लाई करिए कि आपकी जो है कंडीशन कहाँ आती है, वेदर यू आर आउटस्टैंडिंग, गुड. देखिए मैं teaching learning process, all the aspects, whether your feedback, teacher's feedback,
whether students, it is very necessary. Recently we got an NBA accreditation by the NBA. MIT has got the NBA national and recently months. All these processes are to be evaluated by the expert from the NBA. आपकी टीचिंग लर्निंग, आप टीचर्स का फीडबैक कैसे लेते हैं? टीचर्स फीडबैक का आपने फीडबैक ले लिया, लेकिन आपने उसका आउटकम क्या है? तो ऑल दीज थिंग्स बेस्ड ऑन द आउटकम, कोई भी आप चीज करते हैं, इट शुड हैव आउटकम. हमने सेमिनार किया, ये हमने FDP कर रहे हैं, इट शुड हैव द आउटकम. आउटकम शुड आल्सो बी देयर. विदाउट आउटकम, क्योंकि हम जब भी बात करते हैं ब्लूम टेक्सोनॉमी की, आज आउटकम एजुकेशन की बात करते हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की बात करते हैं, तो कोशिश करिए, आप अप्लाई करिए अपने कॉलेज में. अब देखिए हम ये अभी 22 दैनिक भास्कर का 22 मई का ये सारे मध्य प्रदेश का एडिशन है, और ये बिल्कुल ट्रू है. मैंने आपको इसलिए बता रहा हूँ, दैट इज 100% ट्रू. व्हाट वी डू, वी गिव द नंबर बेस्ड ऑन द फेस ऑफ द स्टूडेंट. हमें स्टूडेंट अच्छा लगता है क्योंकि बिकॉज वो हमारे पास बार बार आता है, हमको फोन लगा लेता है, सर कैसे हैं, हम उसको 10% नंबर ज्यादा दे देते हैं अदर देन द अदर स्टूडेंट्स. हमें करना क्या है? ये जो 10% स्टूडेंट, व्हाट इज गोइंग टू बी इम्पैक्ट, इट्स इम्पैक्ट्स ऑन द अदर स्टूडेंट्स, it impacts on the performance of other students. What we should do, जो लोग नकारात्मक मानसिकता और असामाजिक छात्र हैं, ऐसे लोगों को हम बिल्कुल कम नंबर दे देते हैं, बट वी हैव टू पे अटेंशन ऑन दैट स्टूडेंट. हमें उनके बारे में सोचना है. हमें, बिकॉज you are creating the learner centric environment in your students, means each and every student is important for you and you are responsible for that. The learner journey, what the learner journey starts from the admission, classes, sports, projects, experimentation, and it goes to the, it becomes the student become the graduate. So coming to the learner journey, when we start the learner journey, what first, when the student going to be admitted in your institute, what you should do, what I should do, I should have the orientation program. Orientation program is very important. What we should do in our orientation program, check the skill of the student. आपके पास जो student आ रहा है, हमारे यहाँ देखिए, हम इंडिया की बात करें, when we talk about the India, मैंने पहले भी अभी चौहान साहब से कहा था, वो स्टूडेंट आता है, वो क्यों आता है? Because either by the forcefully of wish of her parents, कि बेटा तुझे इंजीनियर बनना है, बेटा तुझे डॉक्टर बनना है. It is the wish of their parents. It is not the wish of the student. चलिए वो आ गया, but आपको यदि, if you want to have your student with good output, so you should have the check the quality of your student. What quality of student you have received in your institute? आपके यहाँ काउंसलिंग से बच्चा तो आ गया है, आपने स्टूडेंट बाय इंटरेस्ट, हो सकता है कुछ बाय इंटरेस्ट they have joined the IPS, they have joined the MITS, but most of the students, they got admission in MITS or other college because of their rank, because of the counseling, they have given this college. So लेकिन आपको करना क्या है? Because you have to improve your quality of your institute, you have to improve the quality of your teaching and learning methodology, you have to check the level of your student. उसका मैथ्स का स्किल क्या है, whether what the skill, communication skill student has, what the English skill that it has. So you have to check the skill, you have to support the student in orientation program. What we should do, these 6 parameters in induction, whether he has opted or she has opted the right course, you have to understand the students. आप बच्चों को समझें. You give the talk by your director, involve your deans in the induction program, involve head of the department,
in induction program. They have to discuss with the parents and the students in the induction program. Identify the needs of the student. वो यहाँ क्यों आया है? Identify the needs of the students. And you have to give them such knowledge about the understanding of your student. आपका इंस्टीट्यूट क्या है, किस तरीके का है, किस तरीके की activities you are going to perform during 4 years. What support you are going to provide to your students, and builds a relationship. That relationship not for the 4 years. You built a relationship for the long lifetime learning. Build the relationship with your student, because you are not here for the 4 years. You are here for the lifetime. Whenever you will be required, you will be here in my institute not as a stakeholder, as a member of this institute. So all these things you have to be give in the induction program. So when the students is going to be entering your institute, you have to be give the induction program for the 15 days. Now the AICT is also telling, organize what is the meaning of that induction program? Why we should go the induction program to the student? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि स्किल डेवलपमेंट है. बच्चा नॉट मैथ्स एंड इंग्लिश, चेक द व्हाट आर द अदर करिकुलर एक्टिविटीज योर स्टूडेंट हैज. वो स्टूडेंट हो सकता है कि इट इज वेरी गुड इन पोएट्री राइटिंग, he is very good dancer, he is very good singer, he is very good horse rider. So all quality you have to check in your students which who entered in your institute. ये आप चेक कर लेंगे. देन यू हैव टू प्रोवाइड द लर्नर सर्विसेज. बच्चा जब आता है तो उससे बहुत प्रॉब्लम फेस होती है, कहाँ जाए, किस काउंसलिंग सेंटर में जाए. तो यू हैव टू हैव द टॉक ऑफ दैट पर्टिकुलर काउंसलर फॉर द इन इंडक्शन प्रोग्राम. Finance services, what kind of finance services he will be needed in 4 years. You should have the career guidance counselor. Library, आपको इंस्टीट्यूट का एक राउंड लगाना है स्टूडेंट को, बार बार उसको you have to have the meeting with all the library in charge, so that the student should have not face the problem during the first year. देखिए बच्चा पहले साल आता है तो it face the lot of problem. So you should have provide the learner centric services. Now take the feedback of survey, feedback of your and outcome of your induction program. I have already told that faculty is the bridge between the knowledge and the student. You are a very good, आपके पास knowledge available है, इंटरनेट पे knowledge available है, NPTEL लेक्चर पे knowledge available है, but तो फिर टीचर्स का रोल तो खत्म हो जाता है. So teacher is a bridge between the knowledge available and the students. So coming, I will show this video to you. We are talking about the tools and table, net, and other social media that is called book. Now coming to the platform centric approach. Moodle, that is called platform centric approach. आपने अपने Moodle पे स्टडी मटेरियल डाल दिया, लेक्चर प्लान डाल दिया, बुक्स हैं, आपने नेट का प्रोवाइड कर दिया, आपने वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए, and you have the Moodle on that. What these, one is the tool centric approach, another is the platform approach.
So tool centric approach, whatever the materials available, platform centric approach, and if faculty will involve, it becomes a student centric approach. तो आपको जो है टेक्नोलॉजी से भी अपडेट रहना है, आपको लेटेस्ट नॉलेज से भी अपडेट रहना है. You have to be involved fully, and if you will combine all these three, you will have the student centric approach. There are different steps of student centric approach. The principles are there. So traditional classroom teaching में हम लोग क्या करते थे, हमने उसको गए, when we go in the classroom, generally what we discuss the curriculum, we talk them. But when we talk about the student learning approach, your standards of teaching will be competitive with the globally. Your approach is globally compatible. Personalized learning. आप बच्चों को पर्सनल लेवल पे लर्न करा रहे हैं. Performance based learning means you are able to show the performance of the students. Each and every, आपने क्विज रख दिया, आपने असाइनमेंट को ग्रेड कर दिया, तो it means performance based learning. Each and every steps you are going to check the performance of the. ऐसा नहीं था कि आपने यहाँ पे स्टार्ट किया और at the end of the semester आपने एग्जाम कंडक्ट कर दिया. Now these days when you are going to be student centered, you have to check each and every week the performance of the students. So you are creating the learning atmosphere amongst the students. Enhance retention and transfer to the adult. When you are going to be apply the student-centric approach means you are going to retention power of the learning. Whatever the student have learned, you are enhancing that, and that will be transferred to the job of the student. आपने बच्चे को इतना अच्छा पढ़ा दिया, ये approach जो whatever the approach that is the student-centric approach, वो आपने क्या किया है कि student have enough knowledge of that subject, he or she is going to apply on the job. It has the attention. आप ये जो approach है student centric approach, it gets the attention. हम बच्चे का आपका जो attention है, teachers attention, students able to gain the attention of the teachers. Inform learners of the objective. आप बच्चे को जाते हो, देखिए हम लोग तो करते हैं ये. In MITS we do all these practices. हम बच्चे को पहले से objective, what are the objective, what are the learning outcome, what are the learning objective. We prior learning, हम बच्चे को पहले से बताते हैं कि कल हम क्या पढ़ने वाले हैं. We inform student, well informed to the student कि हमारा प्लान क्या है. Present content, we are going to present the content. फालतू की बातें हम नहीं, हमें whatever we are teaching, it is related to the topics and it is centered to the students. Student centric approach. Provide guidance. हम बच्चे को हमेशा guidance provide करते हैं. We always give them assignment, quizzes for the practices. We always take the feedback. We always assess the performance. These are the 9 steps for the student centric. हमारे को यहाँ पे we have to think about the students. 7 principles. So after that 7 principles, I will come to the finally हम जो आज कर रहे हैं, that is there is synchronous versus asynchronous. That is what we are doing. We are presently all the teachers, they are doing online learning, online teaching learning methods. These online teaching learning methods we can divide into the synchronous and asynchronous. What we are doing, if I am going to teach only through the online teaching, मेरे को कोई मतलब नहीं है, I will deliver the lecture. I am not bothering who is learning or not learning. That is called asynchronous. But before starting the video lecture through online teaching, I am giving you all the data, giving you lecture plan, each and everything, and even I am providing the video which I am teaching. हम देखिए आजकल most of the institute they are following that what
whatever you are going to teach, it should be recorded so that in future students can rewatch it. So that is called asynchronous learning. Learning, faculty, student, scale and assess. Learning, whatever the platform you are using, whatever the knowledge you are using, faculty like you and students and scales. Sir, good afternoon. Sir, आपने जो scales जो use किए हैं, Sir, whether sir, good suppose I am afternoon. using. Good afternoon. Sir, please highlights this asynchronous and synchronous. Yes, yes, yes. Please, sir, please. When we talk about the synchronous and versus asynchronous types of learning, that is types of learning related to the particular online teaching. When we talk about the online teaching, further online teaching, we can divide into the synchronous and asynchronous. When we talk about the synchronous learning means the students and instructors are required to enable the same virtual platform. We are all, means suppose we are on the virtual platform, but most of the students, they are they off their videos, they are means they just show they are online, but in actual they are offline. So such type of learning, just only I'm just giving the lecture, I'm not bothering whether who is listening or who is not listening, and I'm not unable to face contact with the students. मेरे पास face contact नहीं है students का. That is called synchronous. But if I am involving in asynchronous teaching, I have the face-to-face interaction with the students. I am recording my lectures and giving that to the students so that they can rewatch it and review it. And even that students can comment on my video, sir, that was missing, something missed. That is called asynchronous learning approach. That is we talk about when we talk about the online teaching and learning. Some advantage and what is the basic difference? Learn at the same time, you are learning at the same time. But when we talk about the asynchronous, learn their own time. मेरे को जब time होगा मैं तब भी video सुन सकता हूँ. Live communication, there is live communication as well as you can take the appointment. आप appointment भी ले सकते हैं. Less flexible, more flexible. So when you are going to teach online, you have to adopt the asynchronous teaching methodology. So these are all pillars to assess the quality, online teaching quality. Now, you all know that the audience, the students are our audience. Behavior, the behavior of faculty, what the methodology the student teacher faculty uses. And condition, you will put the condition of grade, what number of grade you have to be earned, how much number of project you have to be earned, and ultimately you have to be got the degree. So coming to this slide, Bloom taxonomy, listen this. Sir, excuse me, there is no voice. Voice नहीं आ रही है. नहीं, इसमें एक काम करना पड़ेगा आपको, राइट हैंड साइड पर वहां पर वॉइस शेयर करना होगा. आ रही है सर आपको? आ रही है? नहीं आ रही है सर आवाज? कुछ आ रही है सर? आ रही है सर, आ रही है सर, आवाज आ रही है. अच्छा. हाँ सर. No, sir, I guess there's no voice. Yeah. एक मिनट, मैं इसको यहाँ से शुरू करता हूँ. म्यूट अनम्यूट का होगा सर. मैं उसको स्टार्ट करता हूँ. यस सर. थोड़ा सा पीछे से. बहुत अच्छा वीडियो है ये.
इसमें ऑडियो भी है क्या गौर सर? हाँ ऑडियो है ना। ऑडियो कुछ भी नहीं आ रहा, मतलब इसमें क्या है, आपके राइट हैंड आप नहीं देखिए। नहीं बाकी लोगों को सुनाई दे रहा है सर। आ रहा है सर, आ रहा है आवाज। आवाज आ रहा है? लेकिन हाँ सर, आ रही है आवाज। लोगों को नहीं आ रहा है सर। नहीं आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा सर। ये राम जी मिश्रा सर आ रही है इंटरनल सर, शेयरिंग तो नहीं है राम जी? नो साउंड सर आ सर। रही है सर आवाज सर। नो साउंड। सच में नहीं नहीं भाई, सबका लिख के आ रहा है नो साउंड भाई। सर नो साउंड नो साउंड। सर आपकी भी आवाज आ रही है मेरे को क्लियर, सर की भी आ रही है। नहीं नहीं, मेरी आवाज आ रही है, और ये जो वीडियो रन कर रहे हैं सर उसकी वॉइस नहीं आ रही है, ठीक है ना? वीडियो उसका जो ऑडियो है वो सुनाई नहीं दे रहा। हाँ हाँ, उसका ऑडियो गौर सर, राइट हैंड साइड हाँ, पर हाँ। आप यदि देखेंगे तो वहां पर एक टैब होगा नीचे, उसमें ऑडियो शेयर करने का ऑप्शन होगा जूम में। ऑडियो आपको शेयर करना होगा नहीं तभी मैंने ऑडियो होगा। एक मिनट क्या कह रहे हैं आप? ऑडियो शेयर करने का ऑप्शन होगा। सुशील, सुशील सर। यस सर, यस सर। हाँ, थोड़ा सर को एक्सप्लेन सर करो। आप शेयरिंग स्टॉप करके दोबारा जब शेयर करेंगे तो वहां पे ऑप्शन आएगा कि शेयर विद योर कंप्यूटर ऑडियो। अच्छा एक मिनट स्टॉप शेयरिंग करता हूं मैं, फिर मैं आपको दोबारा से वीडियो बताता हूँ। लोअर लेफ्ट साइड या राइट साइड में होगा सर ऑप्शन, शेयर विद योर Right. कंप्यूटर या हाँ। लैपटॉप ऑडियो। Bloom's Are you taxonomy watching? is a toolbox Yes, that yes. teachers or students can use to classify and organize learning objectives. बहुत अच्छा Its वीडियो है ये, most popular उनको version बहुत is अच्छे से based on देखिएगा, the आप एनालाइज cognitive करिए। domain and assumes that learning should be structured from easy to difficult in the following 6 steps. 1. Remember. 2. Understand. 3. Apply. 4. Analyze. 5. Evaluate. 6. Create. On the first level, we learn to remember. There is just rote memorization and recollection of facts without much understanding. For example, if we learn about lemons, we want to remember the name, shape, color, size, and that they are sour. Once we memorize these essential in the second level of learning. On level 2, we learn to understand. We begin to decode information and learn that a lemon is yellow when it's ripe to eat, and if we take a bite, that it's really super sour. We also understand that lemons love sunshine and that they contain lots of vitamin C, which is a great natural antioxidant that keeps us healthy. Now, as we really understand a lemon, we can work with it. On the third level, we apply what we know. We've understood that while lemons are sour, they are also a great provider of vitamin C. To apply this knowledge in a meaningful way, we could boil a lemon into hot water and add some honey. Then serve this hot lemon to our sick sister who's in need of treatment. On the fourth level, we learn to analyze. This involves examining and breaking down information into components, determining how the parts relate to one another, and finding evidence to support generalizations. We study the lemon flesh, examine the skin, and look at levels of vitamins. We conclude that we can eat everything inside, while the skin tastes bitter and contains traces of toxic pesticides. It ought not to be consumed. Now we are ready to evaluate. We analyze, critique, and compare. To evaluate our lemon as a good source of vitamins, we compare it to other sources, such as oranges and supplements. We look at the following properties: vitamin levels, affordability, taste, and packaging waste. If we evaluate our thoughts critically and without bias, we learn where the lemons score high and where others score higher. Now, after we have learned, understood, applied, analyzed, and evaluated, we are ready to create.
As we now really understand lemons, also in comparison to similar things, we can formulate a plan to create our own natural lemonade. It's now easy to come up with a cute shop design, a good name, and a good slogan: natural, healthy, yummy. Bloom's taxonomy was first created in 1946 by American psychologist Benjamin Bloom. The revised version from 2001, as just presented, serves as the backbone of many teaching philosophies, in particular those that aim towards teaching specific skills. Each level usually comes with a clear learning objective that can be tested. Critics of the taxonomy often question the existence of a sequential, hierarchical link between each level. What are your thoughts? Please share them in the comments below. अब देखिए यहाँ पे आप when we have gone through the Bloom taxonomy, हम अपना खुद का एग्जांपल दे रहे हैं कि I have prepared the course outcome. देखिए why these processes are going since 1940 Bloom's and revised technology in Bloom's taxonomy, that is in 2001. हमने ऐसा क्यों किया? Because हमें जो है क्वांटिफाई करना हमारी प्रोसेस को. टीचिंग को आप क्वांटिफाई कैसे करेंगे? लर्निंग को आप क्वांटिफाई कैसे करेंगे? अल्टीमेटली आप क्वांटिफाई करेंगे तो यू हैव टू हैव द आउटकम ऑफ योर टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस. तो हमारे जैसे हमने यहाँ पे हीट ट्रांसफर के खुद के, क्योंकि हम लोग कैरिकुलम हमारा खुद बनाते हैं, हम लोग कोर्स सिलेबस खुद बनाते हैं. स्टेट द प्रिंसिपल, स्टूडेंट विल एबल टू अंडरस्टैंड, एबल टू स्टेट द प्रिंसिपल, रिमेंबर वाली बात आ गई. डेवलप द बेसिक कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंड वाली बात आ गई. तो ऑल that we have to cover in our outcomes. So I will finish my lecture here. Sir, anybody who has the question, you are welcome to ask. I will happy to answer that. To answer. Yes, sir. Thank you. Archana ma'am. Yes, sir. Thank you so much, sir, for sharing such valuable knowledge. Now I request all participants to ask their queries if they have any. Please, participants. Participants, you can unmute yourself and ask the query. Good afternoon, ma'am. May I? Archana, ma'am. Yeah, sure, ma'am. Hello. Good afternoon, sir. Thank you so much for a very effective presentation. Kindly pardon me, sir, for the video because there's a little bit of internet connectivity issue. However, sir, I wish to ask, since in the university we are asked to make PEOs and COs. So as this slide rightly demonstrates course outcomes, if you could kindly, sir, just suggest how do we really design program educational objectives and course outcomes in a different way? Definitely course outcome should be as per the Bloom taxonomy. Okay, okay. Whenever we means we have to cover all, minimum there should be 6 and maximum whatever you want. Oh, okay. You have to cover all the remember, understand, apply, analyze, create. All these 6 parameters you have to be, course outcome should contains. Means आप उसको बच्चे को प्रोजेक्ट दे सकते हैं, means you are going to create something, मॉडल बनाने को कह सकते हैं आप. में whenever I am going to analyze my student, when I will grade my student able to submit this report, this project work. तो वो बच्चे कुछ ही होंगे. तो there should be some dissemination between the good students and the slow learners. अब यदि हम इसकी बात करें मैडम, एक मिनट में इसको स्टॉप शेयरिंग और मैं आपको एक शेयरिंग और बताता हूँ.
Hello. When we talk about the program outcomes, these PEO, sir. program Yes. outcomes PEO. based on the particular program educational outcomes. G, G. G, sir. PEOs. And sir, I'm also confused between It should be POs related and to the same PEOs. program outcome and program that is the program educational objective means भी पढ़ा है काफी से related है मान लीजिए ये हमारे कॉलेज के हमारे द्वारा ही बनाए गए हैं मतलब I was the part of that when this was framing. Graduates of the program will able to have the successful professional career. Graduate of the program will and they should be matched with the institute program objective. आपका program objective है this is for the mechanical engineering. When we talk about the program outcome, it is particularly related to what you are going to teach to your students. And out of that, what should be the outcome of that particular four years of teaching different kinds of subjects? Engineering knowledge, problem analysis, design and development, conduct and investigation of complex problem, modern tool uses, all these ethics, all these already given in the Bloom taxonomy. Already these 12, there should be the maximum 12 program outcomes, and 2 will be the for the colleges which are autonomous. For the university institute, there should be the 12. So these are already given in Bloom taxonomy.